Hello students, welcome back to Maths Made Easy. Let us continue with the 9th CBSE lecture number 2, exercise 1.2. And the first question is state whether the given statement is true or false. Okay, so the first question, every irrational number is a real number. So if you remember, हमने जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था तब मैंने बोला था कि द हेड ऑफ द फैमिली इज रियल नंबर. सो रियल नंबर में दो टाइप होते हैं, वन इज रैशनल और सेकंड इज इरैशनल. सो एज पर द गिवन स्टेटमेंट एवरी इरैशनल नंबर बिकम्स व्हाट, a real number. So that means the given statement is a true statement. Okay, let us go to the next one. And the second question is, every point on the number line is of the form of root m, where m is a natural number. Now, we all know, students, that a number line represents the integer number, that is 0, 1, 2, 3, and so on this side. And this is -1, -2, -3, and so on this side. Okay, now can we write 1 in the form of root? Of course, yes. 1 can be written as root 1. Okay, then what is 2? 2 can be written as root 4. Then what is 3? 3 can be written as root 9. मतलब करना क्या है, नंबर को स्क्वायर कर दो और उसमें रूट डाल दो. So -1 can be written as minus root 1. अब माइनस को बाहर रखना है, माइनस को रूट के अंदर नहीं रख सकते, because square root of negative number does not exist. Similarly, -2 को हम लिख सकते हैं -√4 and so on. That means every number on the number line can be represented in the form of root of something. So the given statement is absolutely correct. So we'll write the given statement as a true statement. Let us move on to the next क्वेश्चन. एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. अब ये थोड़ा सा गलत हो गया ना, क्योंकि रियल के तो दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है रैशनल, दूसरा होता है इरेशनल. तो हर एक रियल नंबर को हम इरेशनल कैसे बोले, तो ये तो हम नहीं बोल सकते. सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. और अगर इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि एवरी रियल नंबर is rational and irrational. So it cannot be said only irrational. Okay, next question number 2. Are the square roots of all positive integers irrational? So the answer to the first question here is no. हर एक square root of all positive integers cannot be irrational. If not, give an example. So you can give an example of any square number. For example, square root of 4, the answer is 2, and 2 is a rational number. 2 is an irrational number. So that means the square root of every positive number is not an irrational number. So take any perfect square, root 4, root 25, root 36, root 81. So the answer to all this root gives us a rational number. Okay, next question. And the next question is the very important question. Most of the time, 99% it's been asked in your school exam. And the question is, represent root 5 on the number line. Now, students, before we go to the another construction equipment screen, so that I can teach you this, I just want you to understand the basic concept of representing any irrational number on the number line. तो बेसिकली ये जो irrational number होता है ना, वो होता क्या है, वो होता है hypotenuse of a right angle triangle. ओके, तो ये हो गया नंबर लाइन. अब नंबर लाइन में हमको क्या करना है कि किसी एक नंबर से हमको एक स्ट्रेट 90 डिग्री ड्रॉ करना है. अब उस 90 डिग्री में हम 1 यूनिट मार्क करेंगे और उसको सॉरी उसको हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे. अब जो हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने वाला, ये हाइपोटेन्यूज होता है रूट नंबर, एनी रूट नंबर जो हमें चाहिए. ओके, तो हम रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट अस फर्स्ट सी दैट, एंड देन अकॉर्डिंगली आई विल टीच यू. इट्स नॉट ओनली रूट 5, कोई भी इरेशनल नंबर अगर आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो उसका टेक्निक क्या है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट.
So here is the construction ka screen. So the very first thing, students, you will do is you will take a scale. On that scale, you will draw a straight line. Any measurement, any length ka line, and then you will draw one arrow this side and second arrow this side. We don't want the negative side here, hence I'm starting 0 from the extreme left side. So here I will write 0. Now यहाँ हमें स्केल लेना है. अब आप 0 और 1 के बीच में कितना सेंटीमीटर का गैप लेते हो? आई विल रेकमेंड यू गो फॉर द स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर में ना वो बहुत ही छोटा सा, the entire figure will be very small and it will not look neat. So scale one वन यूनिट जो है वो हम लेंगे 2 सेंटीमीटर का. 1 यूनिट जो है वो हम लेंगे 2 सेंटीमीटर का. ओके, तो हमें करना क्या है? ये देखो, ये स्केल आ गया, ये मैंने 0 के ऊपर एग्जैक्टली 0 रख दिया. अब हर एक 2 सेंटीमीटर के बाद, मतलब 0 के बाद ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ हमने मार्क किया एक पॉइंट. सो यहाँ हम लेंगे, वी विल राइट हियर, this is 1, this is 1, and after, wait, and after 2 the next is 4 पे मैंने एक marking दे दिया. I can't mark exactly on scale, so hence I'm marking it little up. Once the scale is removed, I will mark it perfectly. Okay, so ये मैंने scale रख दिया. अब हम mark करेंगे, this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So I will write here 1, I will write here 2, I will write here 3, and I will write here 4. So इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक नंबर के बीच में 2-2 सेंटीमीटर का गैप है. अब इसके ऊपर का जो डॉट का मार्किंग है, काइंडली इग्नोर इट. ओके, नाउ what we need to represent, we need to represent root 5 on the number line. अब root 5 के लिए करना क्या है? जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि हर एक इरेशनल नंबर जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज. तो हमें करना क्या है? हमें नंबर 2 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. ओके, नाउ यू विल थिंक कि नंबर 2 से ही क्यों हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है? वो इसके लिए करना है हमको नंबर 2 से स्ट्रेट लाइन, दैट आई विल एक्सप्लेन यू वंस वी फिनिश द सम. सो ये मैंने रख दिया प्रोट्रैक्टर नंबर 2 पे और 90 डिग्री मार्क करेंगे. वन स्ट्रेट 90 डिग्री वी रिक्वायर, सो इधर एक डॉट डाल दिया. और now we will join this, so this 2 and this 90 degree. Okay, then we will draw one arrow where I will mark here 90 degree ka symbol. Now we'll take the rounder and I will take 1 unit ka distance. Okay, now what is 1 unit here? 1 unit is 2 centimeter here. So I will take the scale again, और इस scale में we will take 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट का डिस्टेंस हमको राउंडर में लेना है. तो ये ले लिया स्टील पॉइंट 0 पे, पेंसिल पॉइंट नंबर 2 पे, और ये ले लिया हमने 2 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट का डिस्टेंस. स्टील पॉइंट रखना है हमें नंबर 2 में, और पेंसिल पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करना है हमें परपेंडिकुलर लाइन में. ओके, अब इसको मार्क करेंगे हम ए बी. We will write this as A, this point as A, and here we will write B. 0 को हम लिखेंगे O, and we will join OA. We'll join OA, OA. So we'll join OA, and let me join it properly. So we will join OA. So we got here a right angle triangle, and the right angle triangle is OAB. The right angle triangle is OAB. Now the next step is take a rounder again. Now this time you keep the steel point on point O, exactly on point O.
You will keep the pencil point on point A. So ये क्या हमने, ये हम क्या रहे, हमने ले लिया हाइपोटेन्यूज का लेंथ राउंडर में. ओके, अब हाइपोटेन्यूज का लेंथ है क्या, अब उसके लिए हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा. तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ है, फाइंड करने के लिए वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम. Okay, so in triangle OAB, in triangle OAB, let us use Pythagoras. So by Pythagoras theorem. Now, what is Pythagoras theorem, students? Hypotenuse square equal to side 1 square plus side 2 square. So, ये 90 डिग्री के सामने वाले को हम hypotenuse बोलते हैं. So, OA square equal to side 1 हमने AB ले लिया और side 2 हमने OB ले लिया. ओके, सो OA तो हमको मालूम नहीं है, तो OA square as it is आएगा. जो AB है वो 1 यूनिट है, तो हमने 1 लिख दिया. ओ से लेके बी जो है, ओ से लेके बी तक या आप देख सकते हो कि 0 से 2 है, मतलब 2 यूनिट है, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया. सो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5. सो इधर लिख दिया हमने ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 5. स्क्वायर को हम वो साइड शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो स्क्वायर अगर राइट हैंड साइड ट्रांसपोज होता है तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है. तो ओ ए का वैल्यू हमको मिला √5 यूनिट. So the moment we took the distance of OA in the rounder, that means that के राउंडर में स्टील पॉइंट से पेंसिल पॉइंट तक जो है वो √5 का डिस्टेंस आ गया. अब स्टील पॉइंट को 0 पे ही रखना है और राउंडर को हमें इस तरीके से मूव करके आर्क ड्रॉ करना है जो नंबर लाइन में टच होगा. ओके, नाउ द मोमेंट ये नंबर लाइन में टच हुआ, तो जहां ये नंबर लाइन में टच हुआ है, ये जो पॉइंट है दिस इज √5 का पॉइंट, बिकॉज इसका डिस्टेंस जो 0 से लेके इस पॉइंट तक आता है वो OA का डिस्टेंस है, दैट इज √5. तो स्टूडेंट्स बेसिकली हमने किया क्या, हमने ड्रॉ किया राइट एंगल ट्राइंगल. सो एवरी टाइम वेन एवर यू ड्रॉ द राइट एंगल ट्राइंगल, ना सपोज दिस इज √5, नाउ ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये हमेशा 1 यूनिट का ही होता है. अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कहाँ से करना है वो डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ चाहिए था √5, तो इसके लिए मैंने ये सोचा कि विच नंबर +1 विल गिव मी 5. सो द आंसर वाज 4. फिर मैंने ये सोचा कि 4 किसका स्क्वायर है, तो 4 है, 4 2 का स्क्वायर है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है हमको नंबर 2 से. सिमिलरली इफ द क्वेश्चन इज √10, सो यू विल थिंक दैट 1 यूनिट का तो स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन आएगा. So 1 plus what will give you 10? That is 9. So 9 is square of what? 9 is square of 3. 3 square. So अगर आपको √10 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो जहां नंबर 3 है वहां से आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, 1 यूनिट मार्क करोगे और फिर ये 0 पे ये ज्वाइन करोगे. फिर स्टील पॉइंट 0 पे होगा, पेंसिल पॉइंट यहाँ इस पॉइंट में होगा और आर्क आएगा नीचे. सो दिस विल बी √10. सो सिमिलरली whatever root you want, for example √3 हमको ड्रॉ करना है, तो 3 what plus 1 is 3, 2 plus 1, तो 2 किसका स्क्वायर है, अब 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 स्क्वायर. कि इसका मतलब √3 बनाने के लिए हम √2 से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. सो अगर क्वेश्चन √3 का आया तो फर्स्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट √2. Okay, so this way you have to practice it, students, and you can go back to the video again and again, rewind it and listen to the explanation again and again, practice it 3 to 4 times, then only you will get the grip of marking. And also take the example of √10 and do it systematically. Also take the example of √3, do it systematically. Now for √3 you have to do √2, and for √2, now 2 is 1 plus 1. That means on the number line you will make 0, you will make 1, and from 1 you will draw a straight 90 degree line. You will cut 1 unit, join it to the origin, steel point 0, pencil point here, draw an arc. This will be √2. I hope you have understood this exercise 1.2, and I hope you have understood how to represent √5 on the number line. Any doubt, do write me in the comment section, and keep watching this video, and we will be back with 1.3 exercise very soon. Till then, happy learning, students. Bye-bye.